Hi everyone, Ashish Kyal here and welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul. It's fantastic to have you all here. Very warm welcome, Dr. Shah Hussain. It's always great to have you here. Bhavani Ram, Rohit Verma, always welcome Amitabh, Amit, Anuj, Bhavita, all of you. It's fantastic. This is Friday at 4, which we conduct every time, and I'm sure you might be loving what we do here. And people who are watching on YouTube, do ensure you are subscribing to the channel, liking it across, sharing across your comments, because this is very, very important for me to know. Rajesh, welcome to Friday at 4 in Ashish Kyal Trading Gurukul also. And we are going to talk about markets, how it is looking like from the neo wave perspective. और साथ ही में हम कंबाइन करेंगे ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल को, थोड़ा सा देखेंगे वॉल्यूम प्रोफाइल, एंड वी विल सी what are the big traders trying to do here. And if you are someone who is buying option and seeing there is no momentum in the market, I'm sure many of you might be getting that feeling because the market is not going in any direction. लेकिन अगर आप मेरा मॉर्निंग ट्वीट फॉलो कर रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ यू आर फॉलोइंग द मॉर्निंग ट्वीट्स दैट वी आर डूइंग? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम ईच वन ऑफ यू, इफ यू कैन रेज हैंड। आज के मॉर्निंग के कौन से लेवल्स थे आपको मालूम है? 22,630 was the level that was mentioned in the morning, if you remember. And the lower level was mentioned was what? 22,380. Do you know the low and the high made by Nifty? Nifty made a high of 22,625. I think 20 ke aspas 620. And the low made is 22,385. These levels worked like magic. If you are looking at these levels, it is working like magic, right? And despite of the volatility and everything, it is so precise. And पैसा कमाया या नहीं कमाया वो तो बात की चीज है। पॉइंट ये है कि यार ये लेवल्स चलते हैं और बहुत ही प्रिसाइजली चलते हैं, तो ये लेवल्स के ऊपर ट्रेड भी किया जा सकता है। You can follow me on the Twitter link is already shared across. And before I move on, I would like to take a very, very quick poll from each one of you. I want to understand very clearly if what is the trend that you think in the coming week. आने वाले वीक में what is the Nifty trend that you are looking at it in the coming week? And यहाँ पर देखते हैं। एंड दोस्तों जो लोग यूट्यूब पे है, if you want to join me on the Zoom platform, here is the link that I'm sharing across. This is the link where you can join me on the Zoom platform. Everyone who are there on YouTube, Mr. Reddy Singh, your levels are amazing. Thanks Adil for your kind words. You can join me on the Zoom platform जहाँ पे मैं ये सब पोल भी ले रहा हूँ। सलमान मिस्त्री, आप हर रोज पैसा कमाते हैं। ही इज मेंशनिंग ऑसम लेवल्स अर्न 11,000 टुडे। क्या बात है। तो दोस्तों आगे बढ़ने के पहले बहुत ही क्विकली ये पोल मैंने लिया है, पार्टिसिपेट करें कि क्या लग रहा है यार आने वाले वीक में ट्रेंड ऊपर का है या नीचे का है, रिवर्स होगा, कहाँ जाएगा मार्केट, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। सो ये पोल में पार्टिसिपेट करिए। और दूसरी चीज, we are starting with options mantra session which is going to happen tomorrow and day after. Are you all excited who are part of this wonderful Gurukul platform जहां पर हम ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे, सिंपल स्ट्रैटेजी बनाएंगे, पे ऑफ चार्ट्स देखेंगे, एंड वी आर गोइंग टू formulate a clear cut trading style for the coming week. How are we going to do that? Om Bhanu is saying, sir, Terminal 5 worked awesome, made 23,000 plus plus. Okay, Nifty is 23,000 plus plus. नहीं वो नहीं, मेरे को लगा आपने 23,000 पैसा बनाया। तो ऑप्शंस में बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों। देखिए शुरुआत करता हूँ मैं, पोल एंड कर रहा हूँ। आई कैन सी सो मेनी ऑफ यू आर expecting markets to go up. So ये मैंने पोल शेयर किया है। 67% of the people are expecting markets to go up. 33% are expecting markets to go down. चलिए, तो मतलब मार्केट का रुझान फिलहाल के लिए पॉजिटिव लग रहा है। ये मैं स्टॉप करता हूं शेयर करना। अभी यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड व्हेन यू आर ट्रेडिंग ऑप्शंस और व्हेन यू आर नॉट अवेयर अबाउट ऑप्शंस। Options are beautiful instrument created which you can use
इन योर बेनिफिट इफ यू नो हाउ इट वर्क्स। इसमें सिंपल ग्रीक्स भी होते, डेल्टा, वेगा, थीटा, ये बहुत ही इजी है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसको अगर मैं 1 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। डेल्टा मतलब ऑप्शन का वैल्यू कितना मूव होगा विथ रिस्पेक्ट टू दी स्पॉट प्राइस इज नोन एज डेल्टा। थीटा मतलब हाउ मच ऑफ द ऑप्शन वैल्यू विल डिटोरिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज थीटा। मतलब अगर एक दिन निकल गया, ऑप्शन कितना गल जाएगा, कितना वैल्यू ऑप्शन का कम हो जाएगा, दैट नोन एज थीटा। वोलेटिलिटी वे इज वेगा, वी मतलब वेगा। वेगा मतलब होता है यार, अगर वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा, अगर वोलेटिलिटी इज गोइंग डाउन देन द ऑप्शन प्राइस इज विल रिड्यूस इवन इफ द स्पॉट प्राइस इज सेम। सो ये बेसिक इक्वेशन को अगर आपने ठीक से मिक्स किया तो यू विल बी एबल टू फॉर्मुलेट अ गुड ऑप्शन स्ट्रेटेजी, provided you are aware about the momentum of the market, the trend of the market, and if you can forecast the market looking at some concepts of wave theory, that is going to be an awesome way of looking at things. तो चलिए, ये था बेसिक ऑप्शंस के बारे में, जो हम बहुत ही डिटेल में कल और परसों करेंगे। 27-28 अप्रैल को मॉर्निंग 10 AM में रेडी रहना दोस्तों। जो लोग भी ये त्रिशूल के पार्ट है या ऑप्शंस मंत्र के पार्ट है, please be ready. There is a pre-session video which is given across to you today. If you don't have the access, you can contact my team and that's how you are going to do it. लैपटॉप पे ट्रेनिंग बेटर होगा, जरूरी नहीं है, आप मोबाइल से भी सुन सकते, देख सकते। लैपटॉप से स्क्रीन बड़ी होती है तो इट इज ऑलवेज प्रीफर्ड एंड बेटर. So let me not spend much time now. Let me go on to the chart and show you across what is happening with Nifty, what is the GPS suggesting, and what are the weekly, daily trends of the market looking like. मैं अभी जस्ट मेरी रिसर्च के लिए लिख रहा था निफ्टी के बारे में, and I was looking at the concepts of time cycles also. So let me just very quickly share across. This is as per the GPS of the market. If you are able to see my screen, every one of you. यहां पर अगर मैं देखूंगा ओवरऑल वीकली ट्रेंड निफ्टी का, वीकली नहीं, मैं डेली ट्रेंड देख रहा हूं निफ्टी का. दिस इज द ओवरऑल मार्केट ऑन, दैट इज व्हाट यू कैन सी, ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट, वेयर वी कैन क्लियरली सी दैट वेव ई एंड सी इक्वालिटी विथ रिस्पेक्ट टू लॉग स्केल हो चुका है इस लेवल पे, और वहां से सेलिंग प्रेशर आया लेकिन प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया. 21,730 का जो लेवल था वो ब्रेक नहीं किया, और फिर से रिवर्स होके वी आर नाउ स्टक इन अ ब्रॉड मिड रेंज. Let us talk about 55 days time cycle. It's some time since we have addressed this cycle. तो 55 days टाइम साइकिल जो था वो मिडल वाला लाइन है. This from this level, if we look at the momentum, the market is absolutely range bound for 34 days हो चुका है. So from this level अगर आप देखेंगे तो 34 days is where Nifty is right now moving, and absolutely yes Jayesh, it is stuck between the two gain levels. कौन से gain levels है आप बता सकते हैं मुझे? यहाँ पर अगर हम देखेंगे, so if we are measuring this is the time cycle, and if we are measuring this time cycle, this is 34 days. So let me just make a note for you. यहाँ पर से 22,276 and 22,877 absolutely. So from here, from this level, we are around 34 days around in this zone. ठीक है, जरूरी नहीं है कि 34 डेज के बाद में टाइम शुड टर्न ऑन द डाउन साइड. 34 डेज हो चुका है, मोमेंटम नहीं बन रहा है, तो प्रेशर बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, which means in a 55-day cycle usually we are in the second part of the cycle, so there is a chance that we might see some kind of a pressure building on the downside unless the momentum picks up. Looking at the overall structure here, this is looking at a high, this is a lower high, and this is still forming right now. So we are having a major hurdle around this zone. ये जो इक्वालिटी बॉक्स देख रहे हैं आप, ये जो, दिस इज एन इक्वालिटी बॉक्स वेयर वेव ई इज इक्वल टू वेव
see in terms of price, time, both, and that's what I am showing across at this point of time. So looking at the structure, I think that there is a possibility we should see a selling pressure. But we are in an important eventful months where the elections are going on. So we have to be careful and cautious with respect to what, because there is an event. And so we should be open for alternate possible scenarios. So right now, what I am showing you is Nifty 55 days time cycle is already how many days old? It's already 34 days old. And there is lack of momentum on upside. That is for sure. We can clearly see this in कहाँ दिखता है बोलो momentum? RSI divergence. Okay, we can clearly see this in RSI divergence. So it is time to be cautious but not bearish. Bearish मतलब bearish तो था, ये pullback है. That's what I am saying. So it is time to be cautious. And what are the targets if we break important levels? यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो क्या है. यहाँ पर वेव डी जो हमारा कंप्लीट हुआ, उसके बाद में यहाँ से पुल बैक ऊपर आ रहा है. Within this pullback, we can clearly see this is formation of C, this is wave D completion, this is wave E which has completed और completing on the upside, क्योंकि यहाँ पर हम बीच में फंसे हुए हैं दोस्तों. यहाँ पर अभी हमें वेट करना होगा कि ये जो लेवल है यहाँ पर डेली बायस बेरिश टर्न नहीं हुआ है. तो अगर निफ्टी 22,276 गैन लेवल है, if it breaks 22,276, there will be a possibility that wave A on the downside is complete. We got a pullback in the form of wave B, and we will start seeing a move on the downside in the form of wave C. So, but it's too soon to conclude that, because प्राइसेस जाता भी ऊपर फास्ट है, आता भी नीचे फास्ट है, लेकिन रेंज में अटक जाता है. तो ऐसे सिनेरियो में अगर मैं 1 आवर चार्ट पे चेक करूं, so you need to combine with time, it becomes little convenient and easy. And if I'm looking at this chart, this is the overall scenario that I'm looking at from an Elliott wave perspective. Okay, if I'm looking from the Elliott wave perspective, we have wave A which went up, B, C, D, E, F, and wave G is possibly complete. This was A and the B pullback. लेकिन alternate scenario मैंने open कर रखा है. Given the deep retracement which we saw, alternate scenario ये है कि शायद ये wave C हो गया हो, D हो गया हो, E, F, and this can be G which is currently going on. Either ways, whether this is wave B pullback or whether this is wave G, either of the scenario is suggesting that this should not be a very, very big move on the upside. We might be in a matured stage and we should ideally reverse soon. ठीक है, तो फिलहाल व्यू हमारा रेंज बाउंड है. रेंज बाउंड में कौन से लेवल्स दो मुझे इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है. द फर्स्ट लेवल दैट आई एम गोइंग टू मार्क एज वेरी इंपॉर्टेंट is going to be upside which is 22,630, जो मैंने मॉर्निंग में ट्वीट किया था अगर आप ट्विटर फॉलो कर रहे हो तो. एंड नीचे में 22,276 के आसपास का लेवल. सो दिस इज वेयर द रेंज ऑफ द मार्केट इज, and I will wait for this range to be taken out to be betting in that specific direction. It is very important that you look at these aspects of the trading market. Let us now combine with volumes. ठीक है, वॉल्यूम प्रोफाइल. हम इसके अंदर ऑप्शन स्ट्रेटेजी क्या फॉर्म करनी चाहिए वो मैं कल और परसों ऑप्शंस मंत्र के जो ट्रेनिंग सेशन है उसमें डिटेल में बताऊंगा. नाउ लेट मी कंबाइन दिस विथ options volume profile. If I have to look at volume profile very, very clearly, let me go on the chart here.
गो चार्टिंग में यूज कर रहा हूँ एज वॉल्यूम प्रोफाइल. And volume profile also has different styles and shapes and everything. So we'll look at that. But let me just go very quickly and show you on the volume profile, which is the area where the volumes are taking place and how we need to be catering to that. तो यहाँ पर अगर मैं चलता हूँ आपको लेके वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर. एवरीवन, आर यू एबल टू सी दिस? साथ में सुपर ट्रेंड लगा रखा है मैंने जस्ट फॉर रेफरेंस. Again, super trend is a classic indicator. So super trend, KST, volume profile, open interest profile are super indicators which I use, which will be the theme of options mantra tomorrow and day after tomorrow. So you need to be aware about these techniques and these methods. यहाँ पर अगर आप देखोगे वॉल्यूम्स को मैंने अभी जूम इन किया है, कितनी वॉल्यूम्स कहाँ देखनी है यहाँ पर हम बाद में बात करेंगे. नीचे की जो सपोर्ट है 22,100 की है. और अगर मैंने जूम इन किया, ठीक है, जूम इन करके देखते तो करंट एरिया पे काफी अच्छी वॉल्यूम है. ये 22,600 मैंने अभी नहीं लिखा है. 22,600 लेवल जो आप देख रहे हो ये बहुत पहले मेंशन किया गया था. सो 22,600 is where prices are moving up and down, and 22,100 is where the prices are moving, finding out the support. So that is the broad range of the market as per the volume profile. So which means 22,600 पे बड़े players की activity बिल्कुल हो रही है. That's what we can clearly see in this area. That's why 22,600 is where prices are stopping for now. So I need, this is futures chart and this is futures. So spot chart पे I need a break about that 22,630. Once that break of 22,630 happens, we will have a very, very clear indication of a positive momentum start picking up. But if that does not happen, we might just move in a range. तो अगर हमने 22,600 का लेवल ब्रेक नहीं किया, currently it is 22,575 as the futures value. So we will be moving back on the downside towards 22,100, which is again the futures value. I'm just reminding you again and again because ये हम futures के basis पे कर रहे हैं. Are you with me, every one of you? So volume profile में भी क्या होता है? There are shapes that volume profile gives. So Nifty volume profile is suggesting कौन से levels? 22,600 futures as very important level where prices are finding the hurdle. Okay, and because this is the area where big positions are created. यहाँ पर big positions are created and that's why it is an important area. यहाँ पर एक और चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि volume profile will keep changing with respect to the data that you take. More data than if you take, the profile will reduce. Less data that you take, the profile will increase. बहुत सारी चीजें इसमें होती है तो उसके बारे में नटशेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे. If I go on to a 15-minute chart, ये तो मैंने आपको 1 hour टाइम फ्रेम पे दिखाया. If I look at a 15-minute chart of this, and I'm going to hide across, say, super trend. अगर मैं ये 15-minute चार्ट देखूं तो मेरा जो लास्ट राइजिंग सेगमेंट है वो शुरू हुआ था फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स. एंड लेट मी गो ऑन निफ्टी स्पॉट चार्ट. दिस इज फ्यूचर्स. आई विल गो ऑन निफ्टी स्पॉट चार्ट. हाँ, तो मेरा जो लास्ट राइजिंग सेगमेंट है वो यहां से शुरू हुआ था, विच इज 22,305. दिस इज वेयर द लास्ट राइजिंग सेगमेंट स्टार्टेड एंड वहां से हम नीचे आ रहे लेकिन बहुत धीरे आ रहे. तो फॉर मी 22,300 जो कि 22,276 के पास में है, ये 15-minute चार्ट है. दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 क्रूशियल जोन. 22,276 as I said is going to be a crucial zone, and because of price action, because there is a gain area, and because of these combined together, we are
expecting markets to be non-trending. अभी फिलहाल अगर हम बात करें रिजल्ट्स की, तो आई थिंक द मार्केट्स आर पनिशिंग द स्टॉक जिसका रिजल्ट थोड़ा भी खराब आ रहा है, एंड रिवॉर्डिंग द स्टॉक जिसका रिजल्ट थोड़ा भी अच्छा आ रहा है. We can clearly see what's happening around. You might have come across or and news. अगर कोई स्टॉक पे न्यूज है तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दे रहा है. समथिंग लाइक व्हाट हैपेंड विद कोटक बैंक इफ यू आर लुकिंग एट इट. टेक महिंद्रा का अगर आपने देखा रिजल्ट, जो एस्टिमेट्स अच्छे दिए, यू कैन सी व्हाट हैपेंड टू दैट. Bajaj Finance, you can see a sharp decline. So you can clearly see that the market is not in a mood to digest anything which is abnormal, which means कुछ भी abnormality या थोड़ी सी भी extreme reading आ रही है तो या तो strongly punish कर रहा है या strongly reward कर रहा है. This kind of market scenario usually represents lack of conviction, lack of confidence is what we can clearly see from the movement of the stocks. So in such kind of a scenario, you have to be much more careful when you are trading. And in such instances, options become a very important reason. So Kotak Bank is not for the results, of course. Kotak Bank ka to news tha RBI ka, I said that. So what is important now is very clearly the overall tone that you are looking at the market scenario. You have to reduce your time frame from say 3, 4, 5 days of time frame trading to 1, 2 days of time frame trading, because the market trend is changing very quickly and very fast. So let me go back on the Nifty Neo Wave chart and let me show it across again. So we are currently stuck in the middle of the correction. We are not going above the 630 mark. We are not going below 276 mark. We are stuck in the middle of the range. In this middle of the range, the best instrument that can help you trade is options, if you know how to trade options. So that's what I'm seeing the market about, dosto. I thought I'll explain it to you. Any questions, please? And as I said, there is series of divergence. If I'm looking at the daily time frame chart, I can already see the series of divergence on Nifty, where RSI is forming lower highs, Nifty is managing to form higher highs, but there is series of divergence. There is a question here, sir, ऑप्शन मंत्र क्या है? मुरेंद्र सिंह. ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ. हमारा 2 days का लाइव प्रोग्राम है, which is 27, 28 of April, Saturday and Sunday, tomorrow and day after, where we will be having 6 hours of session. Of course, break होगा बीच में, जिसके अंदर हम ऑप्शंस के 5 मंत्रों को देखेंगे. 5 मंत्र क्या है? प्राइस एक्शन, KST इंडिकेटर, we will look at Keltner channel breakout technique, we will look at super trend indicator, and we will be combining with moving average crossover system. ये सारी चीजों को अलग अलग हम देखेंगे. दूसरी 2 चीज कौन सी है? वॉल्यूम प्रोफाइल, ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल. इन चीजों को हम कंबाइन करेंगे ऑप्शन सेलिंग के लिए अगर स्ट्रेटेजी बनानी है तो. सो वी विल फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बेस्ड ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी, मे बी वीकली, मे बी फार अवे स्ट्राइक प्राइस ऑप्शंस, एंड वी विल फॉर्म अ स्ट्रेटेजी फॉर पैसिव सोर्स ऑफ इनकम. अगर ऑप्शन सेल करके हम जनरेट कर सकते, सीइंग द बिग प्लेयर्स एक्टिविटी, व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट आर देयर पोजीशंस, वेयर आर दे क्रिएटिंग देयर स्ट्रेटेजीज. साथ में हम पे ऑफ चार्ट देखेंगे, and all of those things we are going to do that in the options mantra, which is happening tomorrow and day after. And agar aap uske part hai, you'll also be getting a recording for a period of 1 month, and you will be learning all this science. It's a scientific way of trading options. Options are brilliant instrument. And if you want to forecast the market, then you can combine options mantra with neo wave trading, which is going to happen in 1st, 2nd June. बट हम 27th of May से ही आपको एक वीडियो एक्सेस देने वाले फॉर न्यू वेव ऑल्सो, एंड वी कंबाइन दिस टुगेदर एज अ त्रिशूल प्रोग्राम. Okay, so you can still be a part of this Trishul program. We have few seats left. My colleague can share across the link, and you will be a part of it. And people who are already a part of Trishul, do not forget to join me in the morning at 10. And it's going to be very interesting. So, okay, let me just take up a few questions that you might have.
Are you interested, guys? Are you interested in this learning the science of trading options, looking at the simple aspect of just a second, simple aspect of option statistics, Greeks, बहुत ही simple way से करेंगे हम. I'm going to launch a poll. I think there is some problem with the poll. यहाँ पर poll created नहीं है ठीक से. Let me just launch across a poll. Let me ask the team to launch a poll क्योंकि उसमें options मंत्र ही नहीं दिख रहा है, त्रिशूल भी नहीं दिख रहा है. Can you please create a poll so that I can take that very quickly? And I'll answer a few questions meanwhile. Is it possible for Nifty to hit 23,000 in early May, then start multi-week fall? 20 फर्स्ट पहला पड़ाव है 22,630. मेरे लिए अगर वो निकलेगा लेवल, तब भी मैं कह पाऊंगा कि हम ऊपर की ओर जा रहे हैं. And one more thing, guys, I want to share across a QR code with all of you so that you can join my WhatsApp community. I'm going to share across a very quick QR code. You can join me on the WhatsApp. Just a second. And कितने लोगों ने WhatsApp group join किया है so that your learning will continue यहाँ से. You can join the WhatsApp group and please ensure you join the WhatsApp group so that you can keep getting the updates, research, articles, all of those things आपको मिलता रहेगा यहाँ पर. तो स्कैन करिए, क्लिक करिए, YouTube पे भी शेयर कर दीजिए. And very quickly, please do that. And people on YouTube, do not forget to subscribe, like, share, and comments डालना ना भूलें. यहाँ पर okay, there is another question for the. Okay, the poll is ready. So let me just stop the screen sharing. I'm going to take a very quick poll for you all who is interested in this program of options mantra. Just give me a second. यहाँ पर मैंने launch किया है and you can be a part of it. Okay, you have already joined the WhatsApp group. Sandeep Bhuwania is saying your effort to teach us is great. Thank you. Really glad. Go charting can be used in live market. Yes, you can use go charting in live market. मैं कल आपको explain करूंगा बहुत डिटेल में कैसे हमें options को देखना है, go charting के platform पे use करना है या trading view use करना है. I'll share those links also across with you all. So I'm going to do that and I'm going to share that across. There is another question here. Sir, can I join Trishul program now? Yes, you can join Trishul program. We have few seats left for the options mantra. So you can join the Trishul program, which is going to be combining with options. So Trishul क्या है? Options mantra plus Elliott wave plus Neo wave. Okay. Sandeep Hatwar, you are already a part of Brahmastra. So you will be a part of options mantra anyways tomorrow. And educational videos बहुत सारे हैं मेरे YouTube पे already. For many of you who might not be aware of it. And when is the momentum expected to return? I think very soon. We should have a few more days of consolidation. Next week, I think we will consolidate. And then the momentum will start increasing from May onwards. That's what, that's the way I am seeing the market as of now. Okay. And yes, time cycle आप apply कर सकते हो, बिल्कुल. There is a question, sir. I want to learn only options strategies. हम option strategy करेंगे ना, so don't worry about it. We'll be doing it tomorrow and day after, all the option strategies. साथ में, sir, I'm a fresher. How I become a trader? You can be a part of Brahmastra or you can be a part of Trishul. या अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो options मंत्र से. That's what you can do that. And also one more thing, there is an EMI option link if you want to join the Trishul program. So you can join it from there also. The EMI link will be shared across by my colleague and you can do that. Awesome, guys. Then I think we are good to go. Are you all excited to be a part of tomorrow to the elite trading community who is learning about options? सीखना है और करना है. अगर ट्रेड करना है अच्छे से तो सीखो और ट्रेड करो, उसकी बात ही कुछ और होती है दोस्तों. Learning and trading is something very, very phenomenal and you have to learn and trade because that is what real empowerment is. That gives confidence, that gives conviction. That is how it works always.
इज देयर अ सेपरेट सेटिंग फॉर ईओडी चार्ट ऑन गो चार्टिंग? कल परसों हम ये सारी चीजों की बात करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से मिलके मजा आता है। आई एम श्योर you are excited about Friday at 4 that we do. If you like these videos, then आपके कमेंट यूट्यूब पे डालना ना भूले, जिससे I can continue this Friday at 4 for all of you. Thank you very much. Ashish Kyal signing off.